वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं बेटा आप सभी? वेलकम टू द एसएसटी क्लासरूम। ओके, so children, we are discussing the chapter Vital Villages and Thriving Town. In this chapter I had discussed with you I think the NCERT question answer. Yeah, in the yesterday video I discussed with you the NCERT question answer. Now today in this video I am going to discuss with you about extra questions. Okay, so first of all I should write down the date. So what is the date? Date is 10/9/21, class 6, subject SST, where we are discussing about history. We are discussing the chapter 9, Vital Villages, Thriving Town. Vital Villages, Thriving Town. ठीक है? So be ready for the extra question. Your heading should be the extra questions. Heading will be the extra questions. Extra question में firstly मैं आप सभी को MCQs दे रही हूँ as usual. MCQs मैं आप सभी को prepare कराती हूँ बेटा, ठीक है? So MCQs, so sorry. So be ready to write down the MCQs. Fine. The first question is the use of iron in the Indian subcontinent began about. Write down the first question. The use of iron in the Indian subcontinent began about. The use of iron in the Indian subcontinent begin about. Options are MCQs हैं तो आप सभी के पास options भी आएंगे. Children, please note down these questions in your notebook while watching the video. वीडियो देखते देखते आपको इस सारे questions लिखने हैं. So first option is 2000 years ago. 2000 years ago. I hope the board is properly visible to all, and whatever I am writing that is also visible. 2000 years ago. Second option is a million years ago. A million years ago. The third option is 3000 years ago. 3000 years ago. The fourth option is 500 years ago. 500 years ago. Okay? So this is clear to you all? So answer करेंगे बेटा. You all know the answer, and first of all note down the question also. Question note down कर लीजिए. So answer क्या होगा? The use of iron in the Indian subcontinent began about 3000 years ago. Answer C is correct. When it is began about? It is began about 3000 years ago. Question था use of iron. आयरन का यूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब से बिगेन हुआ? तो इट बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो. दिमाग में बैठा लेंगे, लर्न कर लेंगे बच्चों, ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 2. Question number 1 discuss. Question number 2. Velar was the term. Velar was the term. Velar was the term used for. Velar was the term used for dash. एमसीक्यूज है तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन आएंगे बेटा ए बी सी डी. सो फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज लैंड ओनर्स. लार्ज लैंड ओनर्स. ऑप्शन बी इज स्मॉल फार्मर्स. ऑप्शन सी इज कॉमन पीपल. या फर्स्ट आप ले लो. फर्स्ट इज स्लेव्स एंड देन कॉमन पीपल. Velar was the term used for large landowners, slaves, small farmer, common people. So please write it down. वेलानर जो टर्म है ये तमिल रीजन में यूज होता है. मैंने आप सभी को पढ़ाया है. तो इसका यूज किसके लिए होता है? यू हैव टू आंसर. आई होप द बोर्ड इज विजिबल टू यू ऑल एंड यू ऑल इज राइटिंग द आंसर. सो इट इज यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर्स. आई टोल्ड यू ऑल ना बेटा कि तमिल में लार्ज लैंड ओनर्स को वेलालर कहते हैं. एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्राम भोजन. तो रीजन वाइज द नेम ऑफ द पीपल्स आर ऑल्सो चेंज. सो डन द सेकेंड क्वेश्चन. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. Overall the 5 MCQs I will give it to you in extra question. So the third MCQ. ग्राम भोजक was a powerful man. Ram Bhojak was a powerful man. He also worked as a dash. Option A, B, C, D. Option A is judge. Option B is policeman. Option C is counselor. And option D is both A and B. Both A and B. So write down the options, children. Ram Bhojak was a powerful man. He also worked as a judge, policeman, counselor, both A and B. So what will be the answer, children? Answer क्या होगा बताइए जल्दी से. थर्ड. This is the third question. So its option is D. आप सभी को मैंने बताया था कि ग्राम भोजक जो हैं वो दोनों काम करते थे. आंसर डी है. वो कभी जज का भी काम करते हैं और पुलिसमैन का भी काम करते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी. ठीक है.
Okay, I hope you all have written it down. So moving to the next question, question number 4. Question number 4. Mathura is an important center for Mathura is an important center for Mathura is an important center for worship of Mathura is an important center for worship of dash. Options A, B, C, D. बताइए. Lord Rama, Lord. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा. ये इट इज अ जनरल क्वेश्चन ऑल्सो. It is not required that you should study the book so you will be able to answer. Lord Rama, Lord Krishna, Lord Vishnu, or D option is both A and B. Both A and B. ठीक है. So बहुत इजीली एंड क्विकली आप सभी आंसर कर देंगे. आई नो. सो मथुरा इंपॉर्टेंट है. वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा. बी इज आंसर. ये सारे क्वेश्चन, these all question children, you all will write down in your copies, in your notebook. Okay. So moving to the next part. ठीक है. I am going to rub it. Okay, now moving to the question number 5. Question number 5. Between 2200 and 1900 years ago, between 2200 and 1900 years ago, between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a dash. Option A, B, C, D. 2200 और 1900 ईयर्स एगो के बीच में जो अरिकामेदु थे वो क्या थे. ठीक है. अरिकामेदु वॉज क्या था वो? कोस्टल सेटलमेंट. इज इट अ कोस्टल सेटलमेंट? Is it a coastal settlement, monastery, coastal settlement, monastery, religious place, or none of the above? The D option is none of the above. So बताइए बच्चों क्या आंसर होगा. व्हाट इज द आंसर? 2200 से लेके 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड था, अरिकामेदु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट. दिस इज द आंसर. अरिकामेदु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट. फाइन. राइट डाउन द आंसर्स चिल्ड्रन. एवरीबडी. Everybody write down the answers. Okay, so here we have completed children match the following. ठीक है, आगे बढ़ेंगे.
Now the second part which I am going to discuss with you in the extra question and in this video, the second part which I am going to discuss with you is match the following. Okay, so you will write down in the second part, match the following. Match the following. So column A and column B. Okay. So first of all write down the things in column A. A B C D करके आप लिखेंगे. First, large landowners. Large landowners. B, ordinary ploughman. Ordinary ploughman. Ordinary ploughman. Third, landless laborers. Landless laborers. Landless laborers. Option D, village headman. Village headman. Option E, men and women who did not own land. Men and women who did not own land. So here we have draw the column. Okay. Now B part में आप लिखेंगे 1 2 3 करके लिख सकते हैं. 1 2 3 4 and 5. 5 are here also. So write down. सी ऑप्शन में मैंने बिलाला लिखा है. उझावर, okay, so the options are write down whatever the things children I am writing, please. Okay. ग्राम गुजर क्या लिखेंगे आप? Okay. Then दसा सर्वकला. So please write down these things or take a screenshot whatever the things which you want children. और बेटर है कि आप इन्हें लिख लें. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. A B C D E, लार्ज लैंड ओनर्स, ऑर्डिनरी प्लाउमैन, लैंडलेस लैंड ओनर जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है, सॉरी लैंडलेस लेबरर जिनकी जमीनें नहीं होती हैं, विलेज हेडमैन, मैन एंड वुमेन हु डिड नॉट ओन लैंड. तो सबसे पहला है लार्ज लैंड ओनर. तो लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहते हैं? विलालर. ओके. नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी प्लाउमैन. ऑर्डिनरी प्लाउमैन, जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन होते थे उनको कहा जाता था उझावर. थर्ड, लैंडलेस लेबरर, ऐसे लेबर, ऐसे सर्वेंट्स या वर्कर जिनके पास जमीनें नहीं हैं. तो लैंडलेस लेबर को हम लोग कहते थे आदिमई. दे आर नोन एज आदिमई. विलेज हेडमैन, विलेज का जो हेडमैन होता था उसे कहते थे ग्राम भोजन. एंड लास्ट इज मैन एंड वुमेन
who did not own land, वो men and women जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, उसे कहते थे दशा कर्म करा। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। So please match the following and write down this in your notebook also. So the two part I had discussed with you children in the MCQs. Now moving toward to the very short answer type question. आप इसे कर लो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। We move to the very short answer type question. Okay? चलिए। Very short answer type questions. Very short answer type question. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में लॉन्ग आंसर्स में है, या ज़्यादा विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी शॉर्ट. So average type of questions were given. So that is why I am giving you very short answer question in your extra questions. ठीक है. So first question आप लिखेंगे, where were, write down the question. Question number 1. Where were some of the largest? Where were some of the largest? Where were some of the largest collections of iron tools? Collections of iron tools found. कहाँ पे आयरन टूल्स के कलेक्शन मिलते हैं? Where were some of the largest collection of iron tools found? Largest collection of iron tools found. So the answer of this particular question is okay. So question आप सभी को समझ में आया बच्चों? कहाँ पे लार्जेस्ट कलेक्शन आयरन टूल्स का होता था? आप सभी को पता है, they were found in the, answer is they were found in the megalithic burials. They were found in the megalithic burials. Understood? They were found in the megalithic burials. Is it correct? आगे बढ़े. Question number 1 is clear? Now, question number 2. What was the use of iron tools? What was the use of iron tools? Answer. What was the use of iron tool? Iron tools का use क्या है? What was the use of iron tool? So iron tools were used for clearing forest. Iron tools were used for clearing forest. Write down this question as well as the answer. बहुत अच्छे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत क्विकली लर्न भी होंगे. यू विल वेरी क्विकली लर्न दीज थिंग. ओके, सो इट इज डन. टू द नेक्स्ट पार्ट. oops, sorry. So the question number 3, write down, what did irrigation work include?
what did irrigation work include? What did irrigation work include? Irrigation work में क्या चीजें आती हैं? So write down the answer. Irrigation works included. Okay, so children, write down the answer. Irrigation works included canals, wells, tanks. Irrigation works included canals, wells, tanks, and artificial lakes. So this is the third question under the very short answer type question. Please note it down. What did irrigation works include? So irrigation works included canals, wells, tanks, and artificial lakes. Done. Move to the question number 4. I hope this is done. So moving to the question number 4. Question number 4. Mention any one of the function that was performed by the Gram Bhojan. Mention any one of the function that was performed by. Mention any one of the function that was performed by the Gram Bhojan. That was performed by the Gram Bhojan. I think बच्चों अभी ग्राम भोजन के बारे में तो you all got so many questions, so many concepts. Now I think everything is clear about the ग्राम भोजन. सभी कोई याद हो गया होगा कि they were known as the large landowner. तो उनका एक फंक्शन आपको इसमें लिखना है. Mention any one of the function that was performed by the ग्राम भोजन. So the answer of this particular question is the ग्राम भोजन. The Gram Bhojan collected taxes. The Gram Bhojan collected taxes from the village. The Gram Bhojan collected taxes from the village for the king. So Gram Bhojan collected tax from the village for the king. राजा के लिए ये अपने गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करते थे. तो ये एक फंक्शन है ग्राम भोजन का. एंड दैट इज वाई दे आर नोन टू बी वेरी पावरफुल ऑल्सो. इसीलिए वो पावरफुल भी थे. तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. So बहुत क्विकली मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी दे रही हूँ so that you all have the 5 very short answer type question. So with this your extra questions were over. बहुत ज़्यादा extra question भी नहीं करना है. The 3 parts I had given you the extra question. Question number 5 is how did the Dasa Karmakara earn a living? How did the
did the दसा, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द दसा कर्म करा on a living, किस तरीके से जो दशा कर्म करा है वो लिविंग अर्न करते हैं। सो आप लिखेंगे दे यूज टू वर्क ऑन द fields owned by others, ये क्या करते थे, दूसरों के फील्ड पे काम करते थे, ठीक है, इस तरीके से वो अपनी लिविंग करते थे। तो प्लीज राइट इट डाउन चिल्ड्रन और टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली। ओके, so here in this video I had discussed with you the extra question. I hope you all will write it. Okay children, thank you so much.